Hi everyone, this is yours Pratiksha Misra and welcome back to another tutorial from PM by Passion Academy जोठी आपण मानको प्रोवाइड करा जाए टोटल फ्री एजुकेशन विथ सिलेक्शन क्वेश्चन माने बेस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँ कि आपण मानकर सेमिस्टर एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो एंड थंबनेल देखि कि समस्त ऑलरेडी जानि सारिबेनी कि आज हम माने केमिस्ट्री G2 रो कौन कौन सब सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन एंड सिलेक्टिव शॉर्ट नोट रही ता आम डिस्कसन करदेबा ताले आपण माने पेन एंड पेपर बाहर करके रखंतु आपण मानको स्क्रीन ऊपर देखा जाउची क्वेश्चन बीट बाय बीट सबुतिक क्वेश्चन मु आपण मन शेयर करदेबी पिला माने केमिस्ट्री सिलेबस जथेष्ट अधिक रही आपण माने देखि पारथबे सिलेबस केते वास्ट सिलेबस यार अछि सेति पई मु या भितर शॉर्ट क्वेश्चन केबे भी बहुत सिलेक्टिव करके अल्प गुडाय देई परिबेनी जो द्वारा कि आपण मानकर एग्जाम रे खराब हबा सेति पई मु आपण माननको एका संगरे एमिते क्वेश्चन देबी जो गुडा कि बोथ 3 मार्क्स रे भी आसीबो 2 मार्क्स रे भी आसीबो एंड किछि किछि कॉलेज रे 1.5 मार्क्स रे मध्ये क्वेश्चन पैटर्न रहउची शॉर्ट क्वेश्चन आपण मानको मु जहां भी देबी सबुतिक शॉर्ट क्वेश्चन को आपण माने 3 मार्किया हिसाब रे प्रिपेयर करिवे माने इच एंड एवरी शॉर्ट नोट को मिनिमम 7 टा 8 पॉइंट हिसाब रे आपण माने नोट बनइबे जो द्वारा कि सबुतिक शॉर्ट नोट आपण माने 3 मार्किया हिसाब रे प्रिपेयर हेकी गले जहां भी शॉर्ट नोट आपण मानकर 3 मार्किया रे आसीबो 3 मार्किया हिसाब रे लिखिबे जदि 2 मार्किया हिसाब रे आसीबो ताहाले किछि पॉइंट कमई दे कि 4-5 पॉइंट आपण माने 2 मार्किया रे लिखि परिबे जदि से सेम क्वेश्चन आपण माने 3 मार्किया पई प्रिपेयर होचंती किंतु पडुची 1.5 मार्क रे ताहाले भी आपण माने लिखि परिबे तो सेति पई ओवरऑल बेसिस रे म आपण मानको शॉर्ट क्वेश्चन कहि देबी एंड ये सबुटू इंपोर्टेंट जिनस होची लॉन्ग क्वेश्चन जदि बहुत भलो भाबरे प्रिपेयर करूचंती ताहाले लॉन्ग क्वेश्चन भितरु भी मैक्सिमम शॉर्ट नोट आसे खाली मु एबे नुहे मु सब बेले कुए एंड आपण माने निज सीनियर मानको भी पचार दे परिबे जो माने हम चैनल देखि कि एग्जाम देचंती लॉन्ग क्वेश्चन नो मैक्सिमम शॉर्ट नोट सब बेले एग्जाम रे आसे तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत भलो भाबरे प्रिपेयर करके जिबे एग्जाम को ताले स्टार्ट करिबा आज कर वीडियो पिला यदि वीडियो भल लागिबो ताले जानचंती कोन करिवे वीडियो को टिके दिल से लाइक करके हम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एंड जिते भी फ्रेंड्स अछंती जूनियर्स अछंती सीनियर्स अछंती प्लीज समस्त को टिके शेयर भी कर देबे सेमानन को भी पढिया पे बहुत हेल्पफुल रहइबो ताले देखंतो हमरा फर्स्ट क्वेश्चन बाबंतुनी टिके अधिक क्वेश्चन हो जाए जे मु गोटे 2टा स्किप करदेबी बिल्कुल भी से सब मुंडरू काढ़ी दिंतु जमा भी स्किप करने कथा भावतुनि जदि क्वेश्चन स्किप करके जी एग्जाम को ताले मे भी एग्जाम भल न हो पारे जी आप मोटिवेट होती 85% 90% रखिबी से सब मोटिवेशन भी चल एग्जाम रे किछि भी आसबनी जदि एग्जाम को सब स्किप करके जी सो प्लीज खाता पेन बाहर करंतु लिखंतु इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज मु क्वेश्चन डाकिदेबी समस्त 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देके लिखि चलंतु क्वेश्चन समस्त को सिलेबस देखा जाउतबा स्क्रीन ऊपर आई होप समस्त ये गोटे सिलेबस फॉलो करा होतबो कॉलेज रे तो लिखंतु फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स डिस्कस वेरियस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आउ थे कही रखुची क्वेश्चन व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स डिस्कस वेरियस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हाट इज heat of reaction or enthalpy of reaction discuss different types of heat of reaction next question derive Kirchhoff's law of equation derive Kirchhoff's equation problems based on Kirchhoff's equation यानी प्रॉब्लम गोटे से देइथिबा मु प्रॉब्लम बेस्ड एथि पई कहि दिले ए एग्जाम रे आसीबे जे कोनसे गोटे प्रॉब्लम से देइथिबा हम ताको आपण सॉल्व करियो सो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन Kirchhoff's equation ओके नेक्स्ट क्वेश्चन what is Gibbs free energy what is Gibbs free energy and standard Gibbs free energy of a reaction जदि लिखि पारु नांती ताले वीडियो को पॉज कर दियंतु लिखि सारला परे ऑन करंतु किंबा टिके बैक करके लिखि रखंतु ओके what is Gibbs free energy and standard Gibbs free energy of a reaction write the distinction between del G and del G not problems write the distinction between del G and del G not next define law of chemical equilibrium define law of chemical equilibrium give the thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium give the thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium next question derive the relationship between Kp Kc and Kx for a reaction involving ideal gas derive the relationship between Kp Kc and Kx for a reaction involving ideal gas. Next,
Define Lee-Chatelier's principle. Define Lee-Chatelier's principle. Discuss the effect of concentration, pressure, addition of inner gas and temperature change in the equilibrium, and product formation with suitable example. Next, what is degree of ionization? Discuss various factors affecting degree of ionization. Explain what is common ion effect. Say question involved roji. Explain what is common ion effect. Aau thara kahi rakhuche question. This is very very important. What is degree of ionization? Discuss various factors affecting degree of ionization and explain what is common ion effect. Next, most important long question. Derive the ionic product of water. What is pH scale? Derive the relationship between pH and pOH. हाथ टिके स्पीड करंतु लेखिबा नल एग्जाम रे बहुत स्लो हे जिबा हाथ एंड ठीक टाइम भितर 3 घंटा भितर जमा भी पेपर सारी परिबेनी. सो प्लीज हाथ स्पीड करंतु एंड जिते पारुचंती लेखा प्रैक्टिस करंतु. जहाँ भी पढ़ुचंती पढ़िबा सहित लेखंतु. बहुत कम समय अछि. जिते लेखा प्रैक्टिस करिवे एग्जाम रे बेले बेले कोन होय ना हमर मने पड़ेनी. सो मने न पड़िले भी जदि हमर लेखा प्रैक्टिस थिबो ऑटोमेटिक हाथ चली जिवो. सेति पई मु सब बेले कहे सब वीडियो रे कहे जिते पारुचंती लेखा प्रैक्टिस करंतु. एटलीस्ट पर डे 20 पेज लेखा प्रैक्टिस करंतु. ताहले जायकि किसी गोटे एग्जाम रे आपण करि परिबे. 5 मिनिट आगुरु आपण सारी परिबे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. ताहले व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस? Derive the expression of salt analysis constant. किंबा salt hydrolysis constant, comma, degree of hydrolysis and pH of the hydrolyzed salt. Next question, very very important is salt hydrolysis. Take a less important question, but next question is very very important. Give the method of preparation of benzene from phenol and acetylene. Say question रही रोजी. Write a note on Friedel-Crafts reaction and side chain oxidation of alkyl benzene. Friedel-Crafts reaction and side chain oxidation of alkyl benzene. Next most important long question. What is nucleophilic substitution reaction? Give the mechanism of SN1, SN2 and SNI reaction. Next question, short notes on दीटा क्वेश्चन देथिबा. लॉन्ग क्वेश्चन करके 3 मार्क 6 मार्क. सो शॉर्ट नोट्स ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन. ए रे सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड बी बेंजीन मेकानिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. लेस इंपोर्टेंट कहूँ बोली कहीं स्किप करेंगे किंतु पढ़े कहीं लेस इंपोर्टेंट ये कहूँ एग्जाम रे क्वेश्चन आसबार खूब कम चांस अच्छी. जेहेतु कोविड पर आपण मैंने ऑफलाइन एग्जाम दौरान. सो क्वेश्चन टिके बुलेकी आसो से इच एंड एव्री टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड कर दूसरी. जमी भी क्वेश्चन आसो आप सबकि अटेंड करेंगे. जहाँ को मुझे लेस इंपोर्टेंट कहूँ टिके कम फोकस करूँ किंतु पढ़ी जातु एग्जाम को. एमती ना कि पढ़े न पढ़ले जदि एग्जाम आसी जाइए मुझे ग्यारंटी देके कहूनी कि ये क्वेश्चन आसो ये क्वेश्चन आसबनी. मु प्रोबाबल क्वेश्चन कहीदे जो क्वेश्चन
क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो किंतु आपण जदि स्किप करके जिवे ताहले मु कोन करि परिबे मु तो किछ करि परिबे ना सो लेस इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु कहि दोची जहाँ आपण को लेस इंपोर्टेंट कहूची टिके कम इंपोर्टेंस देकी पढ़ी की जानतु जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट कहूची ताको भल से पूरा लेखा प्रैक्टिस करके मुंडे रे पूरा कांसेप्ट क्लियर करके जानतु एग्जाम देवा को ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखंतु टिके लेस इंपोर्टेंट राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से देइथिबो कोन जेमति के हमर अल्कोहल प्रिपरेशन केमति हुए फर्स्ट द ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट रु हुए किंबा ईस्टर हाइड्रोलिसिस रु हुए किंबा ईस्टर रु हुए कार्बोक्सिलिक एसिड रु हुए तो ए सब प्रकार जो मेथड रही है अल्कोहल प्रिपरेशन ना से सब जेकोसी गोटे मेथड से देइथिबो राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट किंबा फ्रॉम ईस्टर हाइड्रोलिसिस एमति टाइप रे जेकोसी गोटे एग्जांपल देइथिबो सो अल्कोहल प्रिपरेशन जो मेकानिज्म गुडा को अछि जो मेथड गुडा को अछि चारटा खंडे ताको आपण माने प्रिपेयर करके जाइथिबे ओके एंड ता सहित आ गोटे कोन पचार देबो क्वेश्चन add a note on esterification add a note on esterification आउ थरे कहि रखुची क्वेश्चन write the method of preparation of alcohol add a note on esterification next question very important notes on a oxidative cleavage of diols and b pinacolone reagent mechanism pinacolone rearrangement mechanism next important long question add a note on Reimer-Tiemann reaction and nitration and sulfonation of phenol next notes on Williamson synthesis and cleavage of ether and HI next most important notes on Cannizzaro reaction B benzoin condensation C aldol condensation A. Cannizzaro reaction B. benzoin condensation and C. aldol condensation next important long question last important long question but very very important preparation of aldehyde and ketone from Rosenmund's reaction and from nitrates ये होची पार्ट A then B रे लिखंतु add a note on Wolff-Kishner's reaction and iodoform test माने दीटा को नेकी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पचारिबो आउ थरे कहि रखुची एथिरे दीटा पार्ट अछि A आउ B A रे लिखंतु प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone either from Rosenmund's reaction पचारि पारे Rosenmund's reduction reaction किंबा from nitrates and B रे रहउची add a note on Wolff-Kishner reduction reaction and iodoform test okay so एठी पाखापाखि 18 रु 20 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लेस इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मु कहि देछि एबे जिबा शॉर्ट नोट पार्ट को टिके धैर्य धरिकी बसंतु मे बी क्वेश्चन टिके अधिक हे पारे किंतु मु जहाँ भी कहूँ एग्जाम रे श्योर आसीबा एंड जदि आपण माने लॉन्ग क्वेश्चन भले से प्रिपेयर करछन ताले शॉर्ट नोट ताहारी भितरु ही हे जिबे एमति नै कि सिलेबस बाहर शॉर्ट नोट आसीबो जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन भले से प्रिपेयर हे के जिबे कांसेप्ट क्लियर हे के जिबे ताहारी भितरु ही शॉर्ट नोट आसीबो जम्मा भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसीबो ही नै गारंटी दे के कहूँ बस मु एमिति क्वेश्चन कहिबी सब टाइप रो कहिबी What is thermochemistry and thermodynamics? What is thermochemistry and thermodynamics? हाथ टिके स्पीड करिवे जेतु टिके अधिक शॉर्ट नोट्स रही खूब कम समय भितरे बहुत गुड़ाए क्वेश्चन मु डाकी देबी नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट zeroth law of thermodynamics next what is enthalpy of a reaction next what is bond energy next resonance energy next bond dissociation energy next Gibbs free energy next law of mass action next define law of chemical equilibrium next state Le Chatelier's principle
दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड समस्त फेवरेट क्वेश्चन स्टेट ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल देखो तो मुझे जहाँ भी सर्ट नोट डाकुची ये मे बी 1.5 मार्क्स से आसीपे कि 2 मार्क्स से आसीपे तो सही अनुसार आप 2 मार्क्स प्रिपेयर हूँ जदि 1.5 मार्क्स आप सर्ट करके लिखिपारे एंड जो 2 मार्क्स आप लिखिपारे कितु जब बहुत सर्ट करके पढ़े 1.5 मार्क्स जदि से सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको भल मार्क मिलबनी से सब कहे टिके अधिक प्रिपेरेसन करूँ जहाँ भी कर टिके अधिक प्रिपेरेसन कले जदि से सेम क्वेश्चन 1.5 मार्क्स या शॉर्ट क्वेश्चन में पलि आसुचे ताले आपण काटिकी मध्ये लिखिपारे किंतु गोटे छोट क्वेश्चन को आपण बड़ करके लिखिपारे है कि जहाँ भी पढ़ुंट शॉर्ट नोट सब 2 मार्क्स हिसाब से प्रिपेयर करूँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखु व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम नेक्स्ट व्हाट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नेक्स्ट कॉमन आयन इफेक्ट next degree of ionization next pH scale next write the expression of ionic product of water आउथरे कहि रखुची write the expression of ionic product of water next what are buffer solution mention its types with example what are buffer solution mention its types with example next define solubility and solubility product define solubility and solubility product next what happens when phenol reacts with zinc dust what happens when phenol reacts with zinc dust next what is electrophile substitution reaction next what is a electrophile next difference between primary secondary and tertiary alcohol next what is nucleophilic substitution reaction next difference between SN1 and SN2 reaction next convert aniline to BDC convert aniline to BDC BDC कौन ना benzene diazonium chloride okay next Getterman's reaction Getterman's reaction next what happens when alcohol reacts with Grignard's reagent what happens when alcohol reacts with Grignard's reagent next what happens when primary alcohol undergoes oxidation next convert cumene into phenol next convert BDC into phenol next what happens when phenol reacts with aqueous bromine आउथरे कहि रखुची क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ aqueous bromine नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ concentrate HNO3 concentrate HNO3 next Reimer-Tiemann reaction next what is Williamson synthesis next prepare aldehyde from acid chloride and nitrites prepare aldehyde from acid chloride and nitrites next what happens when aldehyde reacts with alcohol what happens when aldehyde reacts with alcohol next what happens when formaldehyde reacts with sodium bisulfate next Clemenson's reduction reaction next what do you mean by heat capacity of a thermodynamic system next what are the different kinds of heat capacity next Ostwald's dilution law next Woods fitting reaction next Henderson's equation next molar heat capacity and last question Tollens reagent देखो ये सब जहाँ भी आपण मैंने केमिस्ट्री पढ़ुंट मैक्सिमम क्वेश्चन +2 बेले आम पढ़ी आसछंती नहीं कि सो एबे जदि बास से सब को टिके भल कि बुझिकी रिकॉल करदेवे ना ताहले भी एग्जाम रे बेस्ट हो पारिबो एंड यस जहाँ भी ये सब थ्योरी पार्ट मु कहितली जहाँ भी न्यूमेरिकल्स रही यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रु ताको आपण मैंने प्रैक्टिस करदेवे बुक देखिए सीबीसीएस बुक सब बेले फॉलो करंतु सीबीसीएस बुक रे बहुत बढ़िया से डिराइव होची सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू रो तो सीबीसीएस केपी बहुत बेस्ट
ता देहरे जहाँ भी क्वेश्चन आंसर रोचे से सब किसी सेमिस्टर रे ही आसूची सो जदि आपण माने हायर स्टडी करबा को चाहछन ताले फॉरेन ऑथर बुक फॉलो करि परिबे दैट्स ओके बट सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू रु जो भी सीबीसीएस बुक सब एबे प्रोड्यूस होची ताको ही आपण माने फॉलो करंतु ता भितरे जहाँ भी यूनिट 1 यूनिट 2 रे न्यूमेरिकल्स रहिची से सब को फॉलो करंतु देखिबे एग्जाम रे सब प्रकार रो क्वेश्चन आसीबो एंड ये सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट कथा जहाँ भी क्वेश्चन मु कहली से सब को लिखि रखंतु देखा गोटे सुंदर वीडियो रे सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।